Okay, come to the example number 2. Okay, this is the information written below in the table. This is the information of two machines producing or manufacturing the bottle caps at 10 different times a day. So this is the information. इसको अब इसी तरह से समझ लें कि कोई कंपनी है, पेप्सी कह लें या 7 अप की जो है ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स की वो कंपनी है और वो बॉटल कैप्स उन्हें रिक्वायर्ड है। अब वो कोटेशन डिमांड करती हैं तो या मशीन्स हायर करना चाह रही हैं, वो मशीन्स जो कि ये बॉटल कैप्स जो है वो मैन्युफैक्चर करें। अब उनके पास 2 मशीन्स आई, दोनों मशीन्स का उन्होंने डाटा पहले मंगवाया और यही कह लें कि जी उन 2 मशीन्स पर पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि इन दोनों मशीन से कौन सी मशीन जो है हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो क्या कीजिए, दोनों मशीन्स की जो कैपेसिटी है नंबर ऑफ बॉटल कैप्स प्रोड्यूस करने की पर डे वो सेम है। सेम किस तरह से है जी, आपको नज़र आ रहा है कि पहली मशीन जो है वो भी एक दिन में 850 कैप्स बना रही है और दूसरी मशीन जो है वो भी 850 कैप्स जो है वो बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। बट विच ऑफ द मशीन इज़ मोर एफिशिएंट, मोर कंसिस्टेंट, तो उसके लिए एक दिन में 10 डिफरेंट औकात में 10 डिफरेंट टाइम्स पर they operate the machines, machine A and machine B, and check the consistency, check the performance of these two machines. तो उसके लिए आप चेक करें दोनों की समेशन क्या है जी, 850 है, यानी दोनों की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इक्वल लेवल की है। दैट मीन्स द मीन फॉर द मशीन ए to produce the bottle caps on average is 85 and same for machine B. Reason क्योंकि दोनों की capacity to produce or manufacture the bottle caps per day is same. Now what is the range for the data values of A? Range for data values of A is 27. Oh my god. Range for the data values for machine B is also 27. Okay, now what happens? जी इनकी तो रेंज भी सेम आ रही है। So range is basically the one measure of dispersion to check the consistency or variation or the spread in the data. लेकिन यहाँ पर तो बाय चांस मीन तो सेम था ही, रेंज भी सेम आ गया जी। अब क्या किया जाए? Both the same machines have average 85 bottle caps per minute के लिए and both have the same range. अब उनकी रेंज भी सेम आ गई। Now we need to move towards some new measure of dispersion. अब हमें किसी नए measure of dispersion की तरफ जो है वो move करना पड़ेगा। So let's look below. So better to switch another measure of dispersion named as standard deviation. जी अभी standard deviation किस बला का नाम है तो ये आगे चल के हम देखेंगे जी, हाउ टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम भी होगा क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर भी ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं। लेकिन हम जो मेरा लेक्चर है वो यही है कि जी व्हाई नॉट वी ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको मैं कुछ एप्लीकेशंस इनकी बता रहा हूँ कि हमारी डेली लाइफ में जो है बिजनेस लाइफ में हमें मुख्तलिफ औकात में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं and many of the problems are statistics based problems. So you can easily solve these problems with the help of statistical tools. Okay, we need to switch ourselves to the another measure of dispersion named as standard deviation. Okay, and the standard deviation of data A is 8.273 and standard deviation of data B is 12.319. So which of the machine has the lower standard deviation? It is clear that machine A has
lower standard deviation than mean. Than machine. So standard deviation is basically a measure of dispersion which informs that how much data values are closer about their mean. स्टैंडर्ड डेविएशन आमतौर पर ये बताता है कि वैल्यूज अपने अरिथमेटिक मीन से अपनी एवरेज से कितना क्लोजेस्ट है। अब वो डाटा वैल्यूज जो अपने मीन से क्लोजेस्ट होती हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा स्मॉलेस्ट आता है। मीन्स इफ यू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉलर एंड स्मॉलर, so that means the spread of the data, the spread among the data is very, very small and the values are clustered or nearer to their mean. तो अगर डेव आपके पास बहुत छोटा आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज है ना वो ज़्यादातर क्लस्टर हो गई। क्लस्टर का मतलब ये होगा कि वो इकट्ठी हो गई हैं किसके अराउंड, अपने मीन के अराउंड, अपने मीन के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई हैं। तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है ना बी+ होता है। कई दफ़ा एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, यानी कि एक स्टूडेंट है उसके 95 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और उसके बाद नेक्स्ट पीछे डिक्लाइन जा रहा है 55 पे, 95 से 55 यानी 40 का गैप आ गया। यही कह लें कि जो दो स्टूडेंट्स हैं उनके 95 97 मार्क्स हैं, उसके बाद फिर 50 मार्क्स आ गए, फिर 50 के बाद 40 आ गया, 40 के बाद 39 37 38 42 43 49। तो आपको दो वैल्यूज़ जो हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ नज़र आएंगी। इसको हम स्क्यूड डाटा भी कहते हैं। इस तरह के डाटा को हम स्क्यूड डाटा भी कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा बहुत लार्ज होगा। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल आ जाए तो इसका मतलब है कि द डाटा वैल्यूज आर वेरी वेरी क्लोजेस्ट अबाउट देयर मीन। अब स्मॉल का मतलब क्या होगा, मतलब अगर 0 पॉइंट समथिंग आ जाए तो ये स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है। बट इन आवर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज for data is 8.273 and standard deviation of data B is 12.319। तो इसमें स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है जी, मशीन ए का है। तो इसका मतलब ये है कि मशीन ए की जो डाटा वैल्यूज हैं वो अपने मीन से क्लोजेस्ट हैं एज कंपेयर टू मशीन बी। यही चीज़ तो हमने ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखी थी, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में वी कैन इजीली गेस इट विद द हेल्प ऑफ रेंज, but in this example range for both the data are same, that's why we need to go for the standard deviation। तो किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेसर है, डाटा ए की। तो अब अगर मैं इन डाटा वैल्यूज को ग्राफिकली प्लॉट कर दूं नंबर लाइन पर, जैसे देखें ये मशीन ए को मैंने नंबर लाइन पर ड्रा किया है। कितनी डाटा वैल्यूज है जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 ऊपर लिखा भी हुआ है, फिर भी मैं काउंट कर रहा हूँ इसे। ओके तो ये 10 डाटा वैल्यूज हैं, ये मैंने नंबर लाइन पर ड्रा कर दी। अब इनका मीन क्या आ गया जी 85, ये मीन की पोजीशन है। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी की हुई है। व्हेन आई लुक एट द मशीन बी, जी जब मैं मशीन बी के ऊपर जो है वो हाईलाइट करता हूँ, मशीन बी की वैल्यूज हैं 70 72 71 72 85। तो मैंने उन तमाम 10 की 10 डाटा वैल्यूज को मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। आपको यहाँ पे ना ये पॉइंट के अराउंड एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपको पॉइंट के अराउंड दो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 3 टाइम्स आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसलिए मैंने उस पॉइंट के ऊपर दो सर्कल्स और लगा दिए। जी तो मीन, दोनों डाटा का मीन हमारे पास क्या था, 85 था। बट लुक एट द डाटा फॉर मशीन बी, हेयर द डाटा वैल्यूज आर क्वाइट अवे अबाउट द मीन। लेकिन अगर डाटा ए के बारे में देखें तो डाटा ए में हेयर दीज 4 वैल्यूज 1 2 3 4 ऑन द राइट
and two values on the left, they are closest to the mean. इन 4 values को अगर छोड़ के आप इन values की बात करें तो here the cluster around the mean, the number of values that cluster around the mean is greater than the number that lies here. यहाँ पर मीन पर सिर्फ एक ही वैल्यू ओवरलैप कर रही, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं दे आर क्वाइट अवे अबाउट द मीन. सो आप कह सकते हैं कि मशीन ए इज मोर रीजनेबल, मशीन ए इज मोर कंसिस्टेंट. तो जो पेप्सी की या 7 अप की जो फैक्ट्री थी, दे डिसाइडेड टू परचेज द मशीन ए because their productivity is much better than the machine B, because the spread of the data values to manufacture the bottle caps is closer to its mean. So that's why the company prefer to buy machine A, and that is done by, लेकिन ये आपने किस तरह से एनालाइज किया? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से, या फिर आप डाटा को जो है इस तरह से विजुअली प्लॉट कर लें. बट एवरी टाइम टू प्लॉट द डाटा इज नॉट पॉसिबल, सो बेटर टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन. Okay, there are some key points. Data of machine A is more closest to its average as compared to machine B. Although standard deviation of data A is lesser than the standard deviation of data B. So the data which has the smallest standard deviation is more consistent as compared to the other one. So range provides some of the information about the data. Range is simplest to understand and easy to compute, but it always depends upon the extreme values. So it is not a best measure of dispersion. जी, एग्जाम्पल 1 के स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लिखा हुआ है. एग्जाम्पल 1 में अगर मैं ऊपर जाऊं दोबारा से, ये हमारी एग्जाम्पल 1 थी. इसमें रेंज से हमने डिटरमिन किया था, क्योंकि रेंज y का स्मॉलेस्ट था रेंज x से, इसलिए हमने कहा कि डाटा y जो है वो ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंट है. तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लें इसकी, मैं दोबारा नीचे आ रहा हूँ. In example 1, standard deviation of x is 15.81 and standard deviation of y is 1.58. So since the standard deviation of y is lesser than the standard deviation of data x, so that's why it informs that data y is more reliable, more consistent. You can also check it from the number line. These are the values lies on the number line for sale x, and next one is for the sale y. One can easily observe that the data values of sale y are clustered about their mean, but the data values of sale x are quite far away about the mean, although I have mentioned their standard deviations. Here data values of y are more closest to its mean, see the number line, as compared to the data values of x. So data y is consistent, reliable. Okay, some more key points. Standard deviation is best for comparable goods, objects, or data values. Or standard deviation is useful to check the performance of two groups. But these two groups must be of the similar average size.